चलें जी, अस्सलाम वालेकुम. Roop bete, please let me know if I'm presenting the screen. If this open board is visible to you. Bete, you are inaudible. Please give me a thumbs up if it is visible to you. Okay. Chaleं ji, we'll start the lesson. I've started the recording as well for those who couldn't make it to the class so that फिर कल की class में we can directly start with the past paper questions. As I said in the last class, in this class we are going to discuss Doppler's effect and polarization, and then we'll be done with the waves, and then we'll move on to the superposition. Before getting started with the Doppler's effect, in the last lesson we have seen that waves ko we can represent as the transverse waves, right? So that we can identify their amplitude, we can identify their wavelength and time period. Just to proceed with the next topic, it is very important for us to know that we can also represent it in the terms of wave fronts. Now, see, let's say we have a source which is producing waves of certain frequency, right? These two figures right here, you can compare the frequencies. In this figure, the frequency of the source is greater. That is why the produced waves also have greater frequency, right? Waves are closer together. So या तो मैं ये कह दूं कि wavelength कम है, or I can say that the frequency is greater in this case. And then we have the same situation. We have a ripple tank, उसमें ये पानी है हमारे पास, and then we have a source which is producing waves, यानी वो vibration produce कर रही है एक certain frequency. Now, in comparison to this one, this setup right here is producing wave of comparatively lower frequency. That is why the waves are more stretched out, or in other words, we can say it has greater wavelength. Now that we have two different frequencies की waves, we can also represent, other than crust and trough, we can also represent the waves in terms of wave fronts. What we can do is, जहाँ जहाँ पर हमारे पास crust आता है, that is, we just draw a straight line here. And हम कहते हैं ना, crust to crust, जो भी दो adjacent in phase points के दरमियान की जो separation होती है, उसको हम wavelength का नाम देते हैं. इसी तरह जब हम क्रस्ट और ट्रफ के बजाय ये स्ट्रेट लाइन वाला पैटर्न ड्रॉ करते हैं, सो यू कैन सी व्हाइल कंपेयरिंग दीज टू फिगर्स राइट हियर दैट द सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस इज नथिंग बट wavelength. Clear? And क्योंकि इस केस में we have said that the frequency is greater and consequently wavelength is smaller. जब मैं दूसरे केस में कंसिडर करती हूँ, frequency is greater and frequency is smaller and wavelength is greater. See, compare करें again. One crust, we have drawn this a straight line that we call wave front. Then we have another crust, the peak. Again, we have drawn a line, and the separation between these two peaks gives us wavelength. Likewise, the separation between these three straight lines gives us the wavelength of the wave. And now we can also compare that whenever the lines are closer together, we say that the wave has a smaller wavelength. And whenever the lines are farther apart, we say that the wavelength is comparatively greater. क्लियर? ये तो हमने इस सेंस में पढ़ लिया. लेट्स से मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है, राइट, जो सर्कुलर वेव्स क्रिएट कर रही है. जैसे आपके पास ठहरा हुआ पानी होता है एंड उसके अंदर यू जस्ट ड्रॉप अ पेबल एंड द सर्कुलर वेव फ्रंट से स्टार्ट प्रोपगेटिंग, राइट. ये उसी तरह मेरे पास एग्जांपल है. आप कंसिडर कर सकते हो कि मे बी मेरे पास एक वाइब्रेटर था, राइट, पॉइंट सोर्स ऑफ वाइब्रेशन थी, या मैंने एक पत्थर फेंका पानी के अंदर, सो द वेव फ्रंट्स स्टार्टेड टू propagate away from the source of vibration, right? And in दोनों wave fronts के दरमियान की जो separation है, this is going to be the wavelength. See, and हमें पता है
दिस फिगर राइट हियर सजेस्ट कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वेव प्रोग्रेशन की डायरेक्शन में द सेपरेशन इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अदर वर्ड्स वी वुड से दैट द वेव लेंथ इज नॉट चेंजिंग वेव लेंथ रिमेन्स सेम are we clear with the concept of these representations of wave the one in terms of these lines okay अब we are going to start our main topic from this lesson that is Doppler's effect. Now, what is Doppler's effect? Have you noticed that whenever a source of sound, be it a car with honking horn, be it an ambulance, be it a train, whenever a source of sound moves closer towards you, do you feel कि उस sound की जो pitch है, that is उसकी जो sharpness है, वो increase होने लग जाती है? एंड देन जैसे ही वो सोर्स ऑफ साउंड आपके पास से गुजर के आपसे दूर जाना शुरू होती है तो अब वो जो साउंड आप सुन रहे हो उसकी पिच स्टार्ट्स टू डिक्रीज आई एम नॉट स्पीकिंग इन द टर्म्स ऑफ लाउडनेस लाउडनेस ऑफ कोर्स मेक सेंस कोई भी सोर्स आपके करीब आ रही है तो उसका साउंड आपको ज्यादा तेज सुनाई देगा वो आपसे दूर जा रही है तो साउंड आपको थोड़ा लो सुनाई देगा आई एम स्पीकिंग अबाउट द पिच इज द शार्पनेस ऑफ द साउंड Remember in 11O we had discussed कि sound की frequency is a direct measure of its pitch and sound का amplitude is direct measure of its loudness. Clear? जैसे light के case में the amplitude is direct measure of light की intensity and the frequency is direct measure of उस light का color. Right? Red light is going to have a different frequency, the blue light is going to have a different frequency. So, right now, our focus is not loudness when we are speaking about sound, our focus is pitch. And real life में, practical life में, we have observed that whenever the source of sound comes closer towards us or when it approaches us, the pitch of that sound starts increasing. And क्योंकि pitch is the direct reflection of or the direct measure of frequency, we can say that whenever the source of sound is approaching us, the frequency of sound increases. And whenever this source of sound is receding or it is going away from us, the frequency starts decreasing. But how can that be the reason? Like, how do we describe it? How do we justify it? Because frequency जो आप सुनते हो वो तो उसूलन सोर्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो जो भी लेट्स से उस कार के अंदर या उस एम्बुलेंस के अंदर या उस ट्रेन के अंदर जो भी हमारे पास साउंड जनरेटर लगा हुआ होगा जो भी माइक्रोफोन हमारे पास लगा होगा वो तो एक सेम फिक्स फ्रीक्वेंसी के साउंड एमिट कर रहा होगा इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है जो फ्रीक्वेंसी हम परसीव कर रहे होते हैं दैट इज इसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं तो हम कहते हैं व्हेनेवर द सोर्स अप्रोचेस अस द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस and whenever the source is receding, whenever the source is moving away from us, its apparent frequency or the observed frequency decreases. So instead of directly going with the word frequency, now we have differentiated that there are two kind of frequencies. One is the original frequency, the frequency with which the sound is being generated. And the other is the observed frequency, it is the apparent frequency. Doppler's effect क्या है? Doppler's effect explains that whenever the source of sound is moving, there is a shift, there is a change in the frequency. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में जो फ्रीक्वेंसी आप परसीव करते हो जो फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करते हो वो स्लाइटली डिफरेंट होती है this shift in frequency due to relative motion between source and observer it is called Doppler's effect. In this case, observer can be us, any person who is observing, and source is the source of sound. मैं गाड़ी के बारे में बात करूं, ट्रेन के बारे में बात करूं, approaching ambulance के बारे में बात करूं, whatever it be, it is going to be the source, and whoever is observing or whoever is perceiving this frequency, they are going to act as the observer. Right? अब देखें यहाँ पर we have two figures. In the very first figure, यहाँ पे आपने डायग्राम में वर्ड नोटिस किया होगा, it says relative motion.
एंड रिलेटिव मोशन का हम बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ना, हम कहते हैं लेट्स से टू ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही, तो हम कहते हैं बोथ ऑफ देम आर रिलेटिवली एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग। एंड इसी तरह इफ द टू ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, फिर भी दोनों की पोजीशन एक दूसरे के मुकाबले में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। यू कंसिडर टू रनर्स, they are running on a track in the same direction and let's say they have exactly same velocity, राइट। सो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन दोनों की एक दूसरे के हिसाब से जो पोजीशन थी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, इवन दो बोथ ऑफ देम आर मूविंग, दोनों की पोजीशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज गोइंग टू बी सेम। सो रिलेटिव मोशन के टर्म्स में हम कहते हैं कि रिलेटिवली बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग बिकॉज इन दोनों की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देयर रिलेटिव पोजीशन हैज नॉट चेंज्ड। So now that we have seen Doppler's effect में जो key terminology है मेरे पास, that is relative motion between source and observer, यानी या तो source rest पे है और observer move करे तो frequency में shift आएगा, या अगर observer rest पर है and source उसके करीब या उससे दूर move करना शुरू कर दे तब frequency में shift observe होगा। एंड अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं लेकिन वो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहे, तो भी देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट इन देयर फ्रीक्वेंसी। हो सकता है दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट इनकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिफरेंस है हमारे पास, अगेन दी शिफ्ट इज गोइंग टू गेट ऑब्जर्व। But since we are studying it in the reference of A levels, in A levels they say कि जब आप cases discuss करो, so we have to only discuss the case in which observer is stationary, यानी observer is in the state of rest while the source of sound is moving. क्लियर। अब सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के करीब भी मूव कर सकती है एंड हो सकता है वो मूव करके ऑब्जर्वर से दूर जा रही हो, तो हम बस ये वाले दो केसेस कंसिडर करेंगे। इन द वेरी फर्स्ट फिगर दैट इज राइट हियर, अब हमने दो ऑब्जर्वर्स कंसिडर किए हैं, वी हैव एन ऑब्जर्वर ए एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड एंड देन वी हैव एन ऑब्जर्वर बी एज वेल। जब साउंड की सोर्स मूव नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स ये जो वेव्स एमिट कर रहा है, अगर मैं उसके क्रस्ट को कंसिडर करूं, सी जो अभी हमने तरीका देखा था, सी द सेपरेशन बिटवीन द लाइंस रिमेन्स सेम, दैट इज जो वेव यहाँ पर एमिट आउट हो रही है उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट है, राइट। एंड हमने पढ़ा वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है स्पीड पे तो कोई फर्क ही नहीं है, साउंड की स्पीड एयर में तो कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब है कि फिर इस वेव की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। सो वी हैव अ सोर्स which is emitting a sound with a certain frequency and this same frequency is being observed by observer A without any shift and being observed by observer B without any shift in frequency. Yani let's say if the source was emitting the sound of frequency 500 hertz, this observer will also observe वही 500 hertz की frequency and this observer will also observe वही 500 hertz की frequency. Clear? क्योंकि relatively the source and observer were not moving, they were at rest. Because they were at rest, so there is going to be no shift in frequency. Now, unlike the very first case that we have observed here, in the second case, now the source of sound starts moving. यानी एक गाड़ी कंसिडर कर लें जिसमें हॉर्न बज रहा था, right? Now the car started moving towards left. That is, the car started moving towards the observer A. तो मैं कह सकती हूँ कि ऑब्जर्वर ए के करीब आ रही है ये सोर्स, या मैं कह सकती हूँ ऑब्जर्वर बी से दूर जा रही है ये सोर्स। Clear? Now see, it says if the source is stationary, wave arrives at A and B at the same rate. यहाँ पर clear? However, if the source is moving towards A and away from B, the waves are squashed together in the direction of A, that is, they are pushed together in the direction of A, yani the direction in which the source is moving. And
the waves are spread apart, that is, they move further apart from the observer to which the source is moving away. नाउ वेव्स के क्लोजर आने से और वेव्स के दूर जाने से मैं क्या आउटकम निकाल सकती हूँ यहाँ से? अभी वी अग्रीड दैट द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लाइंस इज वेवलेंथ, जो इस पिछली स्लाइड में भी हम देख कर गए, द सेपरेशन बिटवीन दीज एडजेसेंट लाइंस इज वेवलेंथ. अब यहाँ पर कंसिडर करें, सी for the source which was moving towards A, the separation started to decrease. That is, the wavelength started to decrease. And when we say wavelength decreases, we mean the frequency increases. Because air में speed तो same रहती है sound की. So V is equals to F lambda suggests that if lambda is decreasing, F has to increase in order to keep V constant. क्लियर? तो अभी हमने अग्री किया था कि सोर्स तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करेगी, तो ये इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज फॉर दिस ऑब्जर्वर, यानी ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है या इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, there is apparent shift in the frequency and the perceived frequency is greater than the actual frequency. यानी अगर यहाँ पर इस सोर्स की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी साउंड की, इट वाज 500 हर्ट्ज, तो मे बी द ऑब्जर्वर विल बी ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 580 हर्ट्ज और 620 हर्ट्ज, डिपेंडिंग ऑन एट विच वेलोसिटी द सोर्स इज मूविंग. क्लियर? एंड इसी तरह अगर मैं ऑब्जर्वर बी को कंसिडर करूं, सिंस द वेव्स हैव स्प्रेड अपार्ट, इसका मतलब है ये जो एडजेसेंट लाइंस हैं इनके दरमियान की सेपरेशन इंक्रीज हो गई है. सेपरेशन तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही थी. व्हेन आई से द सेपरेशन हैज इंक्रीज्ड, इसका मतलब है इस ऑब्जर्वर के लिए द वेवलेंथ हैज इंक्रीज्ड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द फ्रीक्वेंसी, द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी has decreased because velocity तो constant है sound की. Clear? That phenomena, this effect is called Doppler's effect. And we summarize Doppler's effect by saying that it is the apparent shift in frequency due to relative motion between source and observer. When the source of sound is approaching the observer, yani when it is moving towards the observer, the apparent frequency is greater than the original frequency. And when the source of sound is moving away from the observer, the apparent frequency is lesser than the original frequency. This effect is called Doppler's effect. See, the sound travels through the air with a speed v, and the speed of sound in air is unaffected by the speed of source of sound. The frequency and wavelength observed by an observer will change according to the speed Vs, that is V for speed and S for source. Vs will represent speed with which the source of sound is moving, and only V is going to represent the speed of sound, which is constant. See, the examiner says that you should be able to understand the Doppler's effect, which we have seen. It is the apparent shift due to relative motion between source and observer. And मुझे दोनों statements भी पता होने चाहिए. Whenever the source is approaching the observer, the frequency increases, and otherwise the frequency decreases. But in our learning objective for A levels, it clearly says that a student should be able to solve the numerical problem using Doppler's equation, right? So this right here is the equation for Doppler's effect. What do we have? Fs in this case is the frequency of source. It is the original frequency of sound. V is the speed of sound in air, which is given to be 340. अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में 340 से अलग कोई वैल्यू देते हैं, 337 or 336, you go with it. Otherwise, we'll always take it to be 340. Clear? This is the speed of sound, and we are going to divide it with the speed of sound plus minus depending on the situation, and then Vs.
This Vs is the speed of source of sound, and this together is going to give us the observed frequency. This F was the original frequency and this Fo is the observed frequency. You would see different notations different books के अंदर. You need not to worry about it. कहीं पे you would see कि ये F naught original frequency के लिए use करते हैं, and then shifted frequency को कभी सिर्फ F कहते हैं, कभी F dash कह देते हैं. V is going to be the speed of sound, and then source के लिए Vs का ही word use करते हैं. So do not get confused with the symbols they are using. You should know कि multiplication में हमेशा we are going to have the original frequency and the speed of sound. And denominator में we are going to have speed of sound plus minus the speed of source of sound, and this entire factor is going to give us the shifted frequency, the observed frequency, या जिसको हम apparent frequency भी कह देते हैं. Right, this is the equation. Now the question arises when to go with plus and when to go with minus. या तो आप रट्टा लगा लें या फिर एक छोटा सा स्टेप है जो आप जब आप ये इक्वेशन लिखें एक वो छोटा सा स्टेप फॉलो करें एंड देन यू वुड नो कि इस केस में आपको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है. थ्योरेटिकली अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया है? हमने अंडरस्टैंड किया है इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज. अब मुझे बताएं ये रेशो कब ग्रेटर वैल्यू देगा? जब डिनोमिनेटर में मेरे पास एक छोटी वैल्यू हो या जब डिनोमिनेटर में मेरे पास एक बड़ी वैल्यू हो. व्हेन वुड दिस रेशो गिव मी अ ग्रेटर वैल्यू? जनरल ट्रेंड बताएं. डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा आता है या डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर बड़ा आता है? यस, जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा आता है. तो अब डिनोमिनेटर छोटा कैसे होगा? जब आप v में से vs को माइनस कर देंगे या जब आप v में vs को ऐड करेंगे? ऑफ कोर्स जब आप माइनस करेंगे. तो या तो आप ऐसे जहन में रखा करें कि whenever the source is approaching the observer, we are going to use the formula with minus, and vice versa. Whenever the source is receding, that is whenever it is going away from the observer, तो फिर we are going to use the formula with plus. Because जब source दूर जा रही है तो observed frequency कम हो जानी चाहिए. And ratio मुझे smaller answer कब देगा? जब denominator बड़ा होगा. And denominator बड़ा कब होगा? जब we have a plus in between. It's up to you. या तो ये minus approaching में आएगा याद रख लें, and receding में plus आएगा वो याद रख लें. Clear? Now that we have clear understanding of when to use which formula, let's solve one example problem here. It says a police car travels towards a stationary observer. Yani observer is at rest and a police car with a siren on, that is the source of sound, it is moving towards the observer. We have a police car, and right here we have an observer and the source is moving towards the observer. So we are going to use the formula apparent frequency or observed frequency will equal to source की frequency, sound की speed divided by sound की speed minus source की speed. So it travels towards the stationary observer with a speed of 15 meters per second. यानी यहाँ पर इन्होंने हमें source की speed दी है 15 meters per second. Then the siren on the car emits a sound of frequency 250 hertz. यानी siren जो original sound emit कर रहा है उसकी अपनी जो frequency है it is 250 hertz. Now they are asking you to calculate the observed frequency जो कि हमें पता है is going to be different than 250 and different भी अब मुझे पता है it is going to be greater than 250 because source is coming towards the observer. ये observed frequency मुझे find out करनी है and they have already mentioned that the speed of sound in air is 340 meters per second. So we have three values which are already given. Fourth is unknown. We can directly go with this equation right here.
चलें जी, so observed is source की frequency which is 250 times sound की speed which is 340 over sound key speed which is 340 minus source key speed which is 15. Is any one of you carrying a calculator with you? Do we have a calculator with us? My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. The Doppler effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency of a wave. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. In the direction it's moving, the wavefronts bunch up, and behind it they spread out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed at a high frequency, and if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. So that is the Doppler effect, the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. It makes sense, but it gets interesting when you consider some of its applications. So let's say you are standing in the middle of a road. That's you, and a car drives past you very fast. As it does so, it honks its horn, because you're standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. So it starts at a high pitch and moves to a lower pitch, even though from the driver's perspective, the horn is playing the same pitch the entire time. So what's going on? As the vehicle's coming towards you, the sound waves that it's emitting bunch up, and so are delivered to you at a higher frequency, which you interpret as a higher pitch, because the frequency of sound waves is pitch. And then when the vehicle passes you and is moving away from you, the sound waves spread out, and so you hear them at a lower frequency, a lower pitch. So that's how the Doppler effect works with sound. It also affects another kind of wave, light. So let's say you look out your observatory and you see a star. Just like the car's sound waves, if the star is moving towards you, even just a little bit, the light waves that it emits will be bunched up, meaning that you see the light at a higher frequency than it actually is. Frequency in sound is pitch, so what does it mean for light? Well, if we look at our handy pocket electromagnetic spectrum chart, we'll see that a small change in frequency for visible light will change its color. Higher frequency light waves means bluer light, and lower frequency light waves means redder light. This is called redshift, and it may possibly be among the weirdest and coolest things of all time. Stars, or anything that you can see, change color depending on their relative motion to you. Of course, you can't see this minute difference with your eyes, but astronomers with the right equipment can use this effect to tell whether stars are moving away from or towards Earth. As it turns out, almost everything we can see in the universe is moving away from us very quickly, which is both an important piece of evidence for the Big Bang and an indication that the Earth might get very lonely in the distant future. Thanks for watching this video. Let me know if you got something out of it. Did we get it? In our course, we have Doppler's effect for sound. Light is not part, but yes, light also shows Doppler effect. In that, they have mentioned that even if you see a star that from your perspective is blue in color, that does not mean that it must be emitting the light with frequency corresponding to blue color. It might be the case that it is emitting a frequency, a certain frequency, लेकिन since because the star is moving maybe towards you or maybe away from you, उसके basis पे जो frequency और जो color आप perceive करते हो, it would be different than the original color that corresponds to the frequency of emitted light, right? And इसी के फिर reference में अगर तो star is moving away from you, इसका मतलब है observed frequency would be smaller. यानी observed wavelength would be greater. Greater wavelength was red वाली side of the visible spectrum, right? इस effect को whenever the star is moving away from us, तो जो हमारे पास apparent shift आता है इसको हम red shift का नाम देते हैं,
एंड लाइकवाइज इफ दैट लाइट emitting source is moving towards us, तो जो हम जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं इट इज ग्रेटर, यानी उसकी वेवलेंथ इज स्मॉलर। एंड विजिबल स्पेक्ट्रम में स्मॉलेस्ट हमारे पास रेड वाली साइड की है, ब्लू वाली साइड की है, राइट। सो इस इफेक्ट को व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स अस, इस इफेक्ट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज ब्लू शिफ्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स the next topic, that is polarization, which is going to be the last topic from this chapter as well. Now, what is polarization? Remember when we were studying longitudinal waves and transverse wave in the last lesson, हमने नीचे उनकी properties में या एक आध जो differences लिखे हुए थे, उसमें we had seen that transverse waves polarization का effect देती हैं, and जो longitudinal waves हैं, if you call it longitudinal or longitudinal, whichever you would want to go with, ये waves polarization का effect नहीं देती। See, it right here also says that polarization is a wave property. It is associated with transverse waves only. So it might be a part of your past paper MCQ. Sound wave can be polarized. No, it cannot be. Why? It is a longitudinal wave. Now, longitudinal waves vibrate along the direction of wave travel. So no matter what the orientation, the wave will be able to get through. ये आपको समझ में आएगा इस वाले पॉइंट के बाद। Now you imagine that you have fixed one end of a rope to a post and then दूसरे end को आपने up and down jerk दिया। तो यहाँ पे दे आर सेइंग कि आपने उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच और कंप्रेस किया, राइट। एंड दूसरे केस में आप उसी रोप को अप एंड डाउन वर्टिकली मूव करवा रहे हो। जब आप अप एंड डाउन मूव करवाओगे तो उस रोप में ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो जाएगी। नाउ these transverse waves are said to be in one plane, right? Because the oscillation is limited to one plane. Along vertical अगर आप उसको up and down jerk दे रहे हो तो वो हम कहते हैं कि ये vertically polarized है। एंड अगर इसी तरह अगर आप उसको horizontally right and left उसी रोप को मूव करना शुरू कर दो तो जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है हम कहते हैं कि ये along horizontal plane polarized है, राइट। यानी जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है। एंड अब जरा आप इसको रिलेट करें लाइट के साथ, बिकॉज हम पोलराइजेशन ऑफ कोर्स लाइट के टर्म्स में पढ़ेंगे बिकॉज इट हैज टू बी अ ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स में वी आर गोइंग टू गो विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ना जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते थे तो हमने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव या जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन वर्टिकल होती है। हमने जब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा था तो हम ऐसे पढ़ते थे कि लेट्स से द वेव इज मूविंग अलोंग राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट करे एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस ऑसिलेट करे, राइट। एंड देन उसके बाद फिर हमने ये भी अग्री किया था कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, हम ऑसिलेशन के टर्म्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को कंसिडर करते हैं। सो इफ द वेव इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी, but then there can be multiple angles, there can be multiple orientations of the vibration of electric field while keeping it at 90 degree to the direction of motion. See, it could oscillate in this plane, it could oscillate in this plane, not this one. See, it could oscillate in this plane as well. All these planes are still at 90 degree with the direction of wave travel, right? So हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है अनपोलराइज्ड होती है वो, यानी उसमें मल्टीपल ओरिएंटेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, while all of them are at 90 degree to the direction of wave propagation. नाउ अब मैं कहती हूँ कि क्योंकि मल्टीपल प्लेन्स के अंदर ऑसिलेशन हो रही है तो मैं कहती हूँ कि ये वेव अनपोलराइज्ड है। एंड पोलराइजेशन फिर क्या फिनोमेना है? पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना जिसमें आप उस वेव के लिए ऑसिलेशन को किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। अब आप ये कैसे करते हो? लेट्स से वी हैव अ सिचुएशन हियर, यहाँ पर पोलराइजेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ वर्टिकल स्लिट, राइट।
This object right here will be called polarizer or polaroid, राइट ये मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट आई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल ओरिएंटेशंस में ऑसिलेट कर रही थी बट व्हेन it passed through this vertical slit only allowed the vertical oscillation to pass and बाकी जितनी भी ओरिएंटेशंस में ऑसिलेशन थी इसने उसको ब्लॉक कर दिया यानी ये जो अनपोलराइज्ड यहाँ से एंटर हुई थी स्लिट से बाहर जो आपके पास आ रही है दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट और इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है वर्टिकल प्लेन इट इज पोलराइज्ड अलोंग वर्टिकल प्लेन इसी की जगह अगर आप यहाँ पर वर्टिकल स्लिट के बजाय एक हॉरिजॉन्टल स्लिट आपने प्लेस की होती तो इस बार ये जो अनपोलराइज्ड वेव है स्लिट से पास होने पे बाकी सारी इसकी ओरिएंटेशंस में ऑसिलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाती एंड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ऑसिलेशन यहाँ से पास होती तब भी मैं कहती कि स्लिट से जो इमिट हुई है हमारे पास दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट बट द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. Now you read this statement here. The vibration of rope are in just one plane, that is the vertical plane. इस original case में the vibrations are described as plane polarized in the vertical plane. You can produce plane polarized vibration in the horizontal plane as well by moving the rope repeatedly from side to side. It would also be fun to keep changing the direction of vibration of the rope. यानी अगर आप उसको jerk देना शुरू करें but कभी आप up and down उसको move करें कभी right and left आप उसको move करें but then depending on आपने आगे polarizer किस axis का लगाया हुआ है उसका ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है वो सिर्फ उसी एक्सिस के अलोंग वेव को पास होना अलाउ करेगा बाकी सारी एक्सिस में ट्रांसमिशन को वो ब्लॉक कर देगा क्लियर सो अ प्लेन पोलराइज्ड वेव इंसिडेंट एट अ वर्टिकल स्लिट विल पास थ्रू दिस स्लिट when the slit is turned यानी अगर एक लाइट हमारे पास ऑलरेडी वर्टिकली पोलराइज्ड है आप उसके आगे एक वर्टिकल स्लिट रखोगे तो वो आराम से पास हो जाएगी लाइट लेकिन अगर वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट के आगे आप एक हॉरिजॉन्टल स्लिट रखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इंसिडेंट लाइट में था ही नहीं वर्टिकल था बट उस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल जो आपके पास स्लिट लगा हुआ है वो तो पास होना अलाउ कर ही नहीं सकता दैट इज वाई जो अब आपको आउटपुट पे मिलेगा इट इज नथिंग ऑन आउटपुट यूड सी नो लाइट so when an unpolarized wave is incident at a vertical slit then all vibrations other than the vertical plane will be blocked and अगर अनपोलराइज को आप हॉरिजॉन्टल स्लिट पे इंसिडेंट करवाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा बाकी जितने भी प्लेन्स में वाइब्रेशन थी वो सब ब्लॉक हो जाएंगी राइट बिफोर स्टार्टिंग विद जो यहाँ पर हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है लेट्स सी अ वेरी ब्रीफ वीडियो जो यहाँ पे हमने रोप वाली एनालॉजी ली है इसको ये लोग स्प्रिंग के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे एंड देन उसके अलावा ये जो मैं आपको पोलराइजर वाली बात बता रही हूँ कि अगर आपके पास पोलराइज लाइट है तो आप पोलराइजर का एंगल चेंज करो तो इमिशन बिल्कुल या ट्रांसमिशन बिल्कुल जीरो भी हो सकता है दैट दे विल एक्सप्लेन हियर Can't trust your AI results? Let barium sift through 170 million. Now, you might be wondering, is light a transverse or a longitudinal wave? How could we test this? This device is called a polarizer. It's designed... No light. How could we test this? This device is called a polarizer. It's designed to let waves get through in only one direction. As I send the wave out, it gets through fine that way, but this way, I can't get the wave through. No matter what crazy wave I send, only the left and right components get through. It's been polarized. Now that only works on transverse waves. If it works on light, then light is a transverse wave. Because light can be polarized, we know it's a transverse wave. This is a polarizer. It's polarizing up and down. This is another polarizer. It's polarizing left and right.
When these two are crossed, we get absolute darkness, zero transmittance. But if we cross them the other way, light still gets through. They're polarizing together the same way. Unpolarized light, for example, from the sun, travels to a polarizer, which polarizes it up and down. The light continues and hits another polarizer, but this polarizer is side to side. That cancels all the light. No light gets through. Did the video make sense to us? He has shown two polarizers. पीछे बल्ब से the unpolarized light must be coming. उसके आगे he placed a vertical polarizer. उसने unpolarized light को plane polarize कर दिया along vertical plane. अब अगर आगे ये vertical polarizer ही रखते तो light pass होकर आ जाती. Of course intensity में थोड़ी सी कमी आती है absorption की वजह से, लेकिन ट्रांसमिशन ब्लॉक ना होती. सो जब ये आगे वर्टिकली ओरिएंटेड ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ पोलराइजर रख रहे थे तो हमें दूसरी साइड का नजर आ रहा था, बट जैसे ही वो उसे रोटेट करके ट्रांसमिशन एक्सिस को अलोंग हॉरिजॉन्टल कर रहे थे तो वो लाइट जो ऑलरेडी वर्टिकली पोलराइज्ड आ रही थी हॉरिजॉन्टल से तो वो गुजर ही नहीं थी पा रही. सो ऑन द अदर एंड वी वर गेटिंग नथिंग, राइट. जो पहला पोलराइजर आप रखते हो फॉर योर रेफरेंस उसको हम पोलराइजर का नाम देते हैं, एंड देन जो दूसरा पोलराइजर आप रखते हो उसको यूजुअली हम एनालाइजर का नाम देते हैं, बिकॉज दिस हेल्प्स अस एनालाइज कि एग्जैक्ट हमारे पास कौन से प्लेन में पोलराइजेशन थी जो इससे ब्लॉक हो रही है या जो इससे ट्रांसमिट हो रही है. नाउ let's see a little bit of its description before ending this lesson. A plane polarized wave incident at a vertical slit will pass through this slit. When the slit is turned through 90°, the plane polarized wave will be blocked. When an unpolarized wave is incident, तो उसका सिर्फ एक प्लेन के अलोंग वाइब्रेशन रिटेन रहती है. अब वो प्लेन कौन सा होगा? इट डिपेंड्स पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है. अगर पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है दैट मींस वो वर्टिकल ऑसिलेशन को अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा. एंड अगर इसी पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है दैट मींस इन दिस केस वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ट्रांसमिट करता एंड वो वर्टिकल को ब्लॉक कर देता. एंड दिस इज द फिगर वी यूज टू शो कि हमारे पास जो सोर्स है वो अनपोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस कर रही है. And this explains right exactly what is mentioned in this diagram. The Polaroid has long chain of molecules because ये जो आपको नजर आ रहा है अभी जो आप पिक्चर में भी देख रहे थे उसमें कोई विजिबल स्लिट नहीं थी, राइट. सो ये जो पोलराइज हैं ये हम मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं. मॉलिक्यूलर चेन की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो सर्टेन एक्सिस के अलोंग लाइट को पास होना अलाउ करते हैं एंड बाकी रिमेनिंग एक्सिस पे वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं. So the Polaroids have long chain of molecules all aligned in one particular direction. Any electric field vibration along these chains of molecules are absorbed. The energy absorbed, of course, because it can never be created nor be destroyed. तो जो यहाँ पर absorb हो गई है वो कहाँ गई? Of course वो thermal energy के तौर पे utilize हो गई. Electric field vibrations at right angle to the chain of molecules, they are transmitted with negligible absorption. And the figure shows that we have an unpolarized light and वो एक polarized पर incident हो रही है. And then जो हमें output के तौर पे मिल रहा है, it is plain polarized light along vertical axis. See, this shows molecules की arrangement. Molecules are arranged horizontally. So ये horizontal direction को allow नहीं करते, ये सिर्फ vertical direction को allow करते हैं. एंड देन यहाँ पे अब ये मुझे बता रहे हैं कि जब मैं एनालाइज करना चाहूँ, अनपोलराइज थी, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सेस वाले पोलराइजर से पास हुई तो इसने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को अलाउ किया ऑसिलेशन के लिए, बाकी सबको ब्लॉक कर दिया. अब जब इस वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सेस वाले ही एनालाइजर से पास करूंगी तो वो तो इसे पास करना अलाउ करेगा विद नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन.
लेकिन जब इसी वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट को मैं एक ऐसे पोलराइजर या एनालाइजर से पास करवाऊं जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन को पास करना अलाउ करता, तो आउटपुट पे 0 आएगा, बिकॉज ये जो इंसिडेंट लाइट है इस एनालाइजर के लिए इट डज नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू बिगिन विद, तो वर्टिकल को तो ये वैसे ही रोक लेगी, हॉरिजॉन्टल तो प्रेजेंट ही नहीं था, सो आउटपुट पे यूड सी एब्सोल्यूट डार्कनेस। हमने अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के केस में देखा, बट दैट इज नॉट वेयर द डिस्कशन एंड्स। व्हाट इफ आप इन दो पोलराइजर्स को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ना रखें, आप इसे इन बिटवीन किसी एंगल पर रखें। लेट्स से यू प्लेस दीज टू पोलराइजर्स, यानी एक पोलराइजर एंड एनालाइजर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और मे बी एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और मे बी एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो अगर आप सेम ट्रांसमिशन एक्सीस के साथ रखते दोनों को, तो 100% इंटेंसिटी मिलनी चाहिए थी दूसरी तरफ। अगर आप एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रखेंगे तो 0 इंटेंसिटी मिलनी चाहिए दूसरी तरफ। लेकिन अगर आप इन बिटवीन किसी एंगल पर रखेंगे पोलराइजर और एनालाइजर को, तो आपको आउटपुट पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, विच ऑफ कोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें तब मिलती जब दोनों सेम एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन के साथ होते। That is what we have mentioned here, and we have a law, that is Malus law. It explains कि आउटपुट पे आपको कितनी इंटेंसिटी मिलेगी जब आप इनपुट पे so and so इंटेंसिटी प्रोवाइड करोगे, when the angle between the polarizers या जो ट्रांसमिशन एक्सीस है इनके दरमियान का कुछ एंगल थीटा है। So the figure right here shows that we have a plane polarized light. Of course, it is not vertically polarized, but it is plane polarized because एक ही हमारे पास ओरिएंटेशन है ऑसिलेशन के लिए। So we have a plane polarized light. It incidents on the polarite. It has a certain axis of transmission which is perpendicular. So the axis of transmission is perpendicular, and जो wave incident हो रही है, it has this direction of oscillation. So there is now a certain angle theta which is not 0, which is not 90 degree. Clear? So now you already know that when theta is 0, light will go through polarite. When it was 90 degree, कोई transmission नहीं होती, लेकिन अब transmission होगी, and कितनी intensity की transmission होगी, it depends on this angle right here. See, the law we have is, the equation we have is from Malus law. It says जो आपको intensity output पे मिलेगी, it would be original intensity जो इस polarizer पर incident हुई थी times cos square theta, where this theta is the angle between plane of polarization and transmission axis. इन दो के दरमियान का एंगल. You have to be very careful with these terminologies. The theta is the angle between the plane of polarization of wave and the transmission axis of the polarizer. Clear? And see, this equation also confirms the same. If the theta is 0, cos 0 gives us 1, 1 square gives us 1, that is जो incident energy, incident intensity थी वही same transmit हो जाएगी। अगर जिस direction में polarize होकर light आ रही है, आप उसी transmission axis वाला polarizer आगे रख लो। एंड इसी तरह अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो, जो हम वर्टिकल केस अभी ऊपर पढ़ के भी आए थे और हमने उस वीडियो में भी देखा था, theta 90 cos 90 gives us 0, 0 का square gives us 0, and 0 multiplied by the original intensity will also give us 0. So this says whenever the angle is 90 degree, the transmitted intensity is 0. No light gets transmitted. क्लियर? सो इक्वेशंस हमारे पास जो है वो वेरीफाई भी होती है। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। पहले तो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोलराइट। सो ये तो थियोरेटिकल है, इसमें यू वुड से कि इट गेट्स पोलराइज्ड एंड ओनली द ऑसिलेशन अलोंग द ट्रांसमिशन एक्सिस विल गेट ट्रांसमिटेड एंड बाकी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। Now this right here we have a question. Plane polarized light of intensity 12 watt per meter square
यानी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी थी it was 12 watt per meter square before it was incident on the polarizer. It incidents at a polaroid. Now calculate the intensity of the transmitted light, यानी मुझे ट्रांसमिशन के बाद इंटेंसिटी पता करनी है when the angle between the plane of polarization of the incident light and the transmission axis of polaroid is 45 degree. And then I have to do the same when this angle is 60 degree. All we have to do is we have to use Malus law. The equation is this. The transmitted intensity we have to find out. The incident intensity, they have said it is 12 cos square 45, and you will get final answer because cos is a trigonometric function. Final answer में कोई unit नहीं आता, it is just a numerical value. The final intensity का unit वही होना चाहिए जो आपने इस incident intensity का unit place किया, that is watt per meter square. And now one thing, while putting this cos square 45 in your calculator, do not square 45 and then you take cos of it. Always write cos 45 and then you take its square. Put these values in your calculator and let me know what is the final answer. And मुझे पता है intensity should be less than 12 in this case because 12 तो तब transmit होती जब angle 0 होता. What is the transmitted intensity? Do we have SN in the class or has he left? Chalein ji, let's just put these values in your calculator and whatever answer do we have in watt per meter square, this would be your final answer. And you just repeat the same question with angle 60 degree. जो हम पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वी विल आल्सो कंसिडर सीरीज, यानी एक आपके पास लाइट इंसिडेंट हुई, वो एक पोलराइजर से पास हुई, कुछ सर्टेन इंटेंसिटी हमें मिल गई, एंड देन अब इस लाइट को हम आगे एक दूसरे पोलराइजर से पास करवाएंगे जो एक अगेन एक सर्टेन एंगल थीटा पर प्लेस, और फिर फाइनल इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे. And that is what exactly is mentioned in your learning objectives as well. It says कि जब polarized light किसी पोलराइजर से या सीरीज ऑफ पोलराइजर्स से पास होती है तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द आउटपुट इंटेंसिटी. And last thing, the graph explicitly is not mentioned in your learning objective, but just so you know that we are on same page or not. Intensity में we have cos का square. So cos अपनी values -1 से +1 के दरमियान देता है, right? But -1 नेगेटिव भी अगर आप इसकी कोई वैल्यू कंसिडर करें या पॉजिटिव कंसिडर करें, देयर स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट? सो इंटेंसिटी का ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट पॉजिटिव साइड. Theta 0 पर intensity is going to be the original incident intensity. At almost 90 it would drop to 0. At 180, cos square of 180 would give you, cos 180 would give you -1, iska square would again give you +1, which multiplied with original intensity will again give you original intensity. And then again 270 will give you 0, 360 will again give you maximum intensity, which is I naught. Clear? So this right here is the graph for intensity. And उसके अलावा मुझे बस एक पॉइंट ये पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड से रिलेटेड. ये जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ लिखी है, Malus law, this was derived using the idea that amplitude identifies intensity, राइट? लाइट का एम्पलीट्यूड उसकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करता है. कल भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इसमें ऑफ कोर्स आगे भी पार्ट था कि इट इज directly proportional to the square of frequency as well, but क्योंकि this was not the part of your learning objective, हमने frequency वाला point नहीं था consider किया. खैर, back to the topic. It says जब एक certain amplitude की light incident होती है polarizer पे, तो depending on the angle between the plane of polarization and the axis of transmission, जो transmitted light होती है उसका amplitude change हो जाता है.
Emitted amplitude क्या है? Transmitted amplitude. It does not remain A naught. It becomes a component of A naught. That is A naught cos theta. So अगर मैं emitted light, अगर मैं incident कहूँ was A naught and इसका amplitude was A naught, incident intensity was I naught. So after transmission, intensity would be A का square. It would be proportional to A का square. एंड मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड अब ओरिजिनल का ये बच गया है, तो इसका स्क्वायर शुड बी ए नॉट स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा. क्लियर? एंड हमें पता है ए नॉट स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज representing the original intensity. So मैं इस a naught square को replace कर देती हूँ and we write इसकी जगह I naught and this cos square theta as it is. This was a very brief definition of Malus law just to give you an idea that originally amplitude cos के factor से कम हो रहा है and क्योंकि amplitude को square करें तो intensity बनती है, तो इसीलिए हम कहते हैं intensity cos square के factor से decrease हो रही है. Right? So this is all we had to discuss about the polarization and the Malus law. Doppler's effect में से भी and Malus law में से भी numerical questions are the part of your learning objective and इन दोनों effects की जो theory है basic, they are also the part of your learning objective. With this we have completed waves. कल की class में on campus we'll inshallah be solving इसके कुछ past papers and then we'd move to superposition. Now I hope it made sense to you. Let me know if we have any confusion. Okay, the final answer was 6. ठीक है. Rayan Ahmed, we don't have any confusion. Arup bete, do you have a confusion? Okay. Chalein ji, till the next lesson. Allah Hafiz. I'll be sending this video on the group or maybe the GCR as well for your reference. Chalein ji, Allah Hafiz.